हेलो गाइस, वेलकम टू एटेक स्टूडियो। तो आज हम पाइथन को इंस्टॉल और इसको पर इंस्टॉल वीडियो को इंस्टॉल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाइथन से। इस प्रोग्राम से पहले वो टाइप करें पाइथन डाउनलोड और हमें और चीज वेबसाइट पे जाना है। डाउनलोड्स पे विंडोज, मैक ओएस और अदर प्लेटफॉर्म की ऑप्शन होती है। उनमें से प्लेटफॉर्म आता है स्विच। मानो विंडोज तो विंडोज वाला लेके विंडोज वाला 13.3 तो डाउनलोड हो रहा है तब तक हम बेस कोड को लेंगे। तो बेस कोड के लिए इसका क्या होगा, टाइप करें बेस कोड डाउनलोड। इसके बाद आप डाउनलोड करना है। तो जब तक ये डाउनलोड होता हूँ पाइथन इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको ये ऐड टू फाइल क्लिक करना है और ये दूसरा ऑप्शन एक सेकंड इस दोनों ऑप्शन क्लिक करें और जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट प्लीज कीजिए। और ये डाउनलोड तक वेट करते हैं थोड़ा देर। थोड़ी देर बाद ऑप्शन मिलता होगा। तो फिर इसको मैं इंस्टॉल करते हैं। सॉरी फॉर माय टाइम। How come you like the pen? Comment. तो gracefully don't stop the thing. That और क्लिक कीजिए बंद नहीं। दोनों ऑप्शन को टिक करें और यहाँ पर हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो क्लोज करें। तो अभी हम लिखे हमारे हमारा पहला कोड। तो पहले कोड लिखने से पहले हमें सबसे पहले कोड सेटिंग्स को चेंज करना होगा। ताकि हमें यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम का फील आया। फिर हमें यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो आपको इनमें से कोई भी एक्सटेंशन चाहिए कोई देखिए सारी चीज आपको सर्च में मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिएगा। तो हम पहले इसकी क्लोज करेंगे और फुल लोड करेंगे। इसको हम डॉक्यूमेंट सेव करें और इसको नाम देने वाले क्रिएट करना। तो क्रिएट करते ही फोल्डर इसको नाम देते हैं पाइथन।
तो ये हो चुका है। तो हम सबसे पहले जब हम नोट्स को ओपन करते हैं, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार चेक कर सकते हैं। ये नोट्स So Python is high-level interpreting program that is more clever and huge ecosystem libraries. तो Python को वेब डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, डाटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग और एआई को भी यूज किया जा सकता है, ऑटोमेशन, स्क्रिप्ट एंड साइंस में इन जैसे यूज किया जा सकता है। तो Python एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है और क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डॉक्यूमेंटेशन। हम अब एक प्रिंट फंक्शन से सिखाने वाले प्रिंट, तो पहला पढ़ना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजुअली हर प्रोग्रामिंग का सबसे पहला लाइन देते हैं, तो हम फोल्डर का नाम देते हैं फर्स्ट फर्स्ट डॉट पी वाई। So guys, for that again, so हम भी शुरू करते हैं हमारा पहला कोर्स। तो लिखना है प्रिंट ब्रैकेट और हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रिंट एक फंक्शन होता है, आप फंक्शन की जरूरत नहीं सिखाएगी, बट आगे हम सीखने वाले प्रिंट फंक्शन किसी भी वर्ड को प्रिंट करने के लिए देख सकते हैं। ये आउटपुट में प्रिंट हुआ है, तो हम रिव्यू ओपन करते हैं। रिव्यू ओपन हुआ है, तो अब इसे वापस से रन करते हैं टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल रन हो चुका है, तो देख सकते हैं वहां पे आ चुका है। So print output text or other objects we console. So print output text or other objects multiple values ले सकते हैं, multiple values को, जैसे कि a comma t। अगर हम comma को छोड़ दें तो ये wrong हो जाता है, हमारे पास error आ जाता है। तो customize prints specifically ये variables in Python. So variable is the name that refers to a space. You can create a sign of variable using operator is method. तो execute operator से हम name methods start with to add the अभी add the age was to 16 and add the name marks is equal to 84.40. तो अभी हम थोड़े से उसके रूल देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स को किस तरह लिख सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम में हम लेटेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, डिजिट को इंक्लूड कर सकते हैं एंड हाइफन को प्रिंट, बट हम करना स्टार्ट विद एंड डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। और पाइथन के सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो कैपिटल ए स्मॉल ए डिफरेंट, और इंस्टेड ऑफ नेम लाइक ऑफ इक्वल डायनेमिक टाइपिंग में भी हमारी केस सेंसिटिविटी और टाइपिंग का भी डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे ये तीन होमवर्क है, तो वेरिएबल क्रिएट करना है, प्रिंट करना है, और पाइथन के डाटा टाइप्स को स्टडी करना है। तो पहले हम इसे प्रिंट करके दिखाते हैं। So print
name, comma, name, and age, comma, age, और print March month. तो अब इसे रन करके देखते हैं। ये रन हो चुका, देख सकते हैं आप सब कुछ प्रिंट हो चुका और वो भी नेम मार्क के साथ।